हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस। तो आज हम दोबारा से कोशिश करेंगे इसको मारने की। कल तक तो मरा नहीं था ये, कोशिश करते हैं। अभी नीचे आता हूँ। कल ज़्यादा मैं कर नहीं पाया था, बट इस बार मैं ना पहले छोटे वालों पे फोकस करूँगा। पहले छोटे वाले मार दूंगा ताकि इस पे ट्रिपल अटैक हो जाए। There should be a node I can override nearby to shut it down. पर इस पे अटैक नहीं होगा पहले। I'll wait for the machines to come. Here we go. बड़ा मेरे पीछे है वो यारी मशीन। Then I'll get the big guy. उस पे ध्यान ना दो तो ये भी दिक्कत है। We have to get down there. That dome of light. Is it protecting the machine? Yeah. There should be a node I can override nearby to shut it down. So let's try again. ज़्यादा ही जल्दी बर्न नहीं कर रहा। Then I'll get the big guy. अब इसको सबसे ज़्यादा डैमेज अब होगा। That's exciting. Machine's got heavy weapons in its back. If I can detach them, I can use them against it. अबे यार ये कहाँ से आ गया? ऑलमोस्ट डेड है। ओके, अब ये मशीन्स तो गई।
So I think I can focus on this one now. एक और आ गया रैप्टर. आया नहीं मेरे पास वापस. ये कमाल हो रही है कि वो वापसी नहीं आ रहा किसी वजह से. भाई तू मेरे पीछे क्यों भाग रहा है? उसको मारना यार. उसी टाइम कूदा है जिस टाइम मैंने छोड़ा है. एक तो ब्रेक हो गया. इसके क्लस्टर बॉम्ब्स तो बंद होंगे अभी. एक बचा है बस. उसके बाद फिर मैं इससे दूर रह सकता हूँ. ये वही कर रहा है. अब फायर फ्लेम फेंकेगा. भाई चीटिंग. पता नहीं कौन सा कंपोनेंट रिमूव हुआ है इसका. ब्लास्ट डैमेज भी बहुत कम हो रहा है इसको. इससे गिवन अटैक. अच्छा अभी इसका दूसरा उतरा नहीं है. वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा. एंड ही इज स्टिल स्ट्राइकिंग. यार ये पीछा ही नहीं छोड़ रहा. ओके इसका हॉर्न भी गया. नाउ आई हैव एक्सप्लोसिव्स. तो ये वाला आर्मर तोड़ना है. And he's stunned. एक और पड़ेगा इसको.
almost dead. Okay, he's dead. Now he's dead. Got him in my sights. Is he dead or not? Okay, he's dead. अब बस इसको मारना है, ये जो साथ में है इसके. Can you use a shock attack? It's done. अभी जितना भी सामान गिरा पहले वो उठाना है. Warning a machine that nearly killed us. It's still her god. I do not grieve for a god or a machine, but because I no longer know what to believe. Look, so if you want, you can go back home. Do I still have one? And if so, for how long? Can you really heal our lands? Save my people? Yes. One step at a time. But it starts now. अरे रुक जा यार, सामान वामान उठाने दे पहले यार. ये कॉल्ड्रन से बाहर ना ले जाए बस मेरे को सीधा. जो सामान गिरा है मैंने सारा अंदर ही रह जाएगा. करप्शन हटा नहीं लेकिन मुझे लग रहा अभी तक. Not bad. Up we go. अभी नहीं. There's more. हाँ. Like Aloy said, this is only the beginning. ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना प्लीज. हाँ, थैंक गॉड. मेरा सारा गिरा हुआ सामान रह जाता. Aloy, हेल्थ तो सारी खत्म हो गई. my focus is showing holograms. इसके हॉर्न्स पड़े होंगे यार. इसके हॉर्न और इसकी गन्स पड़ी होनी चाहिए. गन तो चलो काम की नहीं है लेकिन हॉर्न्स हैं. अबे गायब हो गए क्या इसके हॉर्न्स? जो गिराए थे मैंने. ओके, शायद ये पड़े हैं. कमाल ही हो गई यार, ये तो गलत है यार. इसके हॉर्न्स गायब ही हो गए हैं. यहीं तो गिराए थे यार मैंने हॉर्न्स. बताओ यार कितनी मेहनत करी थी मैंने. ये क्या है? बताओ यार. रेयर आइटम्स जो थे वही गायब कर दिए, जो काम के नहीं थे वो रखे हुए हैं अब भी. उसको गिराते ही उठा लेने चाहिए थे. इसके ऊपर तो नहीं है इसके हॉर्न?
ये ऊपर पड़े हुए हैं शायद, मुझे लग रहा है। I've completed the game yesterday. The way they explained the plot, Ted Farrow's fate, you'll find it disturbing. Ending leaves you excited. This game is absolutely spot on, man. I'm in love with Aloy. Machines I haven't scanned yet. So yeah. Bristleback, plow horn, override unlock. Got what you need? Yes. Let's press on. Yay! I'm level 20 now. बहुत जल्दी खत्म कर दी यार तुमने मशंत, लेकिन वैसे मैं स्लो खेल रहा हूँ एक्चुअली, तुमने तो जल्दी नहीं करी। मैं ही गेम बहुत ज़्यादा स्लो खेल रहा हूँ। वॉरियर बो वाला नहीं चाहिए, तो हंटिंग वाला चाहिए। ये श्रेडर गॉन्टलेट ले लेता हूँ, क्योंकि यही वाला काम आया था मेरे को कंपोनेंट्स अटैच करने में। उतारू विस्परर, मेरे पास अभी भी एक स्किल पॉइंट है। सबसे ज्यादा मैंने इसी स्किल ट्री में इन्वेस्ट किया लग रहा है। एंड दिस इज अनलॉक्ड, बस इक्विप करना है इसको अगर करना हो तो। I've played 2 weeks, I got platinum, completely explored everything। अरे भाई साहब, मैं भी कोशिश करूंगा प्लेटिनम की, हो पाया तो। ओके, अब मेरे को जाना कहाँ है? मेरे को इसके ऊपर चढ़ना है मेरे ख्याल से। I'm not able to go up। ऊपर कैसे जाऊं मैं? अच्छा यहाँ पर है एग्जिट। मेरे को लगा था ऊपर से ही निकलेगा, बट यार ये गलत है यार, मेरे वो हॉर्न्स इसके ऊपर रह गए। मैं ले नहीं सकता। 70 hours प्लस। नाइस मैन, नाइस। That doesn't sound good. Was that the speed? अभी तो DLC भी आएगा। I don't think so. At least. DLC आने इस मतलब 2-3 महीने में मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए एक DLC। Attention. All personnel must vacate the facility immediately. Something doesn't want us here. इसके जो DLC भी बड़े होते हैं, लास्ट वाले का DLC बहुत ही बड़ा था। What exactly was this place? Seen anything like it before? Yes. No. No, झूठ क्यों बोल रही है? There. That's our way out. Error. Unauthorized access. Initiating facility lockdown. अरे Staying out. What's going on? बंद कर दिया हमको। Well, at least the emergency lights work. What just happened? Minerva's definitely here. And I think it's trying to keep us out. I'll scout ahead, see if there's a way to get us in. You sure we shouldn't come with you? Well, yeah, Minerva could be dangerous. अच्छा ये But बात make कर sure रही है it's इसलिए safe. तब तक अलाउड नहीं है, Okay. उसके बाद प्राय ओपन We'll be करेगी। right here if you need us. मैं नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं अब समझ नहीं आ रहा। 2 रास्ते हैं मेरे पास। नीचे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बट फिर भी एक बार देख लेता हूँ, क्या पता कुछ पड़ा हो। अरे अच्छा, इसलिए नीचे का रास्ता था कि बाय चांस अगर मैं गिर जाऊं तो। So, घोड़ा कहाँ है? All this. Minerva. Hephaestus. Gaia. हेलो वंश This भाई, is what will help क्या heal हाल है? Clean some. वेलकम टू द it's स्ट्रीम hard to ब्रो। explain. I mean, I barely understand it, but yeah, it's what Aloy's been looking for this whole time. के ये ऊपर आते भी कैसे? जिनको रोक कर आई है पीछे। I need to find where Minerva's hiding. I should look for a way to access the facility systems. ये तो खुलेगा नहीं, पहले ऊपर देखता हूँ क्या है।
Locked. ये प्रॉपरली लॉक्ड है, वो वाला ट्राई ओपन कर सकता हूँ। ओके Alert. Restricted access. You are not wanted here. Nope, sorry. You're not getting rid of me. भाई सीओडी ट्राई कर रहा, सीओडी करी है भाई, खेली तो है। This leads. ये तो मेन होगा, लेकिन पहले केव एक्सप्लोर कर लेता हूँ। सीओडी यार एफपीएस टाइप, It's shooting me out. मतलब सीओडी अच्छी है, मैं मना नहीं करूँगा, बट उसमें ना बहुत ज़्यादा अपडेट आ जाता है ना, तो पसंद नहीं आता मेरे को। बहुत बड़े बड़े अपडेट आ जाते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर पूरी गेम दोबारा से डाउनलोड करो, और साइज भी छोटा नहीं है, तो इसलिए नहीं खेलता। खेली हुई है मैंने सीओडी, मैंने सीओडी से ही गेमिंग स्टार्ट करी थी, Might be a way out मॉडर्न of वॉरफेयर shot. 4 से, मतलब खाली मॉडर्न वॉरफेयर से। सीओडी 4, मॉडर्न वॉरफेयर 4 नहीं थी बस, सॉरी। Looks like another part of the facility. जिसका भी रीमास्टर ही बनाई है एक तरीके से। Door's locked. तो हम कहाँ जाएं? डोर लॉक्ड है तो। Don't think I'm getting through that door right now. I should turn back, see what else I can find. वो ग्रीन शाइन फ्रैगमेंट मिल गया, नाइस। ऊपर ही जाना पड़ेगा, नीचे तो नहीं है कुछ। Okay, I'm out. And I'm outside. I need to find a way back into the facility. Maybe I could look for a way in higher up the mountain. मेरे हेल्थ पोर्शन 12 हो गए। मैंने कुछ ऐसा स्किल अपग्रेड किया है क्या? ये तो 10 होते थे जहाँ तक मेरे को याद है। I'm close. If I can get Minerva to cooperate, I can merge it with Gaia. Finally bring her back. And we can start fixing the blight, the storms, and maybe she can help me figure out who those strangers in the proving lab were. ऊपर स्टॉर्मबर्ड है क्या ये? Why did they have a clone of Elizabeth? किसके पास लेके जा रही है? Why सनविंग। did they want it back up? उड़ने वाली मशीनों के पास लेके जा रही है मेरे को। I might be able to glide to that ledge. चार हर्ब्स मिल रही हैं एक बारी में, 2 की जगह। मेरे ख्याल से वो स्किल मैंने अपग्रेड कर लिया है ना, जो जिसकी वजह से मेरा वैलर सर्च भी खुल गया है, उसकी वजह से हुआ है ये। Some of those rocks look loose. I think I can clear them. Ah, another वापस आ shaft. गई फैसिलिटी में। Okay, now I've got to find a way to plug into this place. Looks like some kind of dome. Wonder what it's for. ऊपर नहीं जा रही है, मेरे को लगा शॉर्टकट होगा तो चले जाऊंगा वहां से। Alert. System core penetrated. यहाँ पे एक और मशीन होगी क्या? वो फिर से आ रहे हैं लग रहा है। Minerva, I need the console. Please. Access denied. It didn't used to be like this. Do you remember it? Anything? You were part of something bigger once. Something good. Gaia. That's right.
She can live again. But only if you give her the chance. I can't reboot her without you. Light, cease. I think you'll disappear into her. Become part of her. Like you used to be. मशीन है इंसान है फीलिंग्स है मशीनों में Easily. Let's cease. Yes. अब मुझे लग रहा है वो फिर से आ जाएंगे मास्टर्स Thank you, Minerva. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Minerva function to original code. Do you wish to initiate heuristic matrix? Here goes. अभी तो एक हुआ है मुझे लग रहा है मेरे को सारे करने पड़ेंगे एक ही उससे बन गई गाया इनकम्प्लीट है लग रहा है ऐसा Gaia. Greetings, Dr. Sobek. A moment. Scanning data. पुरानी गेम के सीन्स So it is Aloy, not Elizabeth. We have much to discuss, but initialization of my heuristic matrix will not be complete for several अब minutes पक्का more. इतनी देर में मास्टर्स आ In the जाएंगे इतनी देर ये meantime, रुकेंगे नहीं I suggest you familiarize yourself with this facility. It is our best option for a base of operations. And you can make use of its equipment to improve your ability to override machines. Yeah. Yeah, that sounds good. Shall I grant access to your companions? They will be here shortly. Okay, but don't overwhelm them, okay? They don't have a lot of experience with things like, well, you. अब ये इसकी गॉडेस बन जाएगी So no fake this time? No. This time she's real. Borrel, Zoe. This is Gaia. Hello. Hi. Hi. Gaia's still, waking up. Let's look around. I will highlight the location of the lab on your focus. I have established a network between your focuses, allowing you to communicate when apart. Good. So what was this place? A regional control center, where Zero Dawn progeny would have overseen terraforming operations in the area. What's all this? This was intended as the main gathering space for बहुत control सारे center जगह हैं यार बहुत operatives. सारे डोर्स हैं You could fit a good number of people in here. Or maybe just a few. To start with, you two go ahead. I'm going to Looks like an office. poke around a bit. Correct. The facility was designed with a number of private offices. I guess it's nice to have a space to call your own. ये तो नहीं Gaia? खुलेगा Why doesn't this door have power? At my current operating level, I am only able to restore functionality to part of this facility. In time, that may change. Got it. तो बाथरूम है What's this space for? This would have been the sleeping quarters for control center operatives. Reminds me of the bedhouse aspirants had to sleep in the night before the proving. This would have been an access point for advanced training modules on terraforming operations.
Unfortunately, those modules were deleted when the Apollo data... तो Looks like वापस another ऑफिस ही लग office. रहे हैं. If no one's ever been here, who built all this? Gaia did, with the help of machines. So this was supposed to be a lab. क्या That was its intended purpose. Some of the machine data you recovered from the repair bay below us appears to be corrupted. Accessing the terminal in this room will show you how to repair and complete the override. अच्छा, जैसे वाइड मो का मेरे पास take a look. कंप्लीट ओवरराइड नहीं है, ये उसके लिए होगा. Bang on. क्राफ्ट ओवरराइड. हाँ, वाइड मो का मेरे पास पूरा नहीं है, इसके लिए वाइड मो टच चाहिए जो साली मिलती नहीं है. प्लाउ हॉर्न, ये 2 हॉर्न मेरे पास थे जो मुझे मिले नहीं. इनको तो कर ही लेते हैं. अब मैं इनको ओवरराइड कर सकता हूँ प्रॉपरली. इन दोनों को अभी भी नहीं कर सकता. ये क्या है? स्कैन नहीं किया क्या मैंने इसको इस बार? ये ऐसा क्यों दिख रहा है? Well, I was able to repair some of the corrupted overrides. But it looks like I need data from more machine parts to fix the rest. My initialization is complete. You may continue to explore the facility, Aloy. When you are ready, return to the control room. We ये तो have दरवाजा much लॉक to है. discuss. सेंटर में नहीं गया मैं बिल्कुल भी. कुछ भी नहीं है सेंटर में. चलते ही है. सारी So this फैसिलिटी place was देख तो here ली all है. this time. Built for people who would never show up. मेरे ख्याल से तो देख लिया सारा. Why didn't they? Remember that guy I told you about? Ted Farrow? He... Okay. Maybe it's time to talk to Gaia. I'll leave you to it. एक्सप्लोर द बेस अभी तक पूरा हुआ नहीं है, तो मुझे लग रहा है अब भी कुछ है इस पे जो नहीं हुआ है कंप्लीट. Back already? I might want to look around more first. I'll come with यहाँ you पर then. भी थे. ये क्या है? अच्छा, यहाँ से तो मैं What's all आया this था. stuff for? ओके. This facility was designed to process an immense amount of data from the terraforming system. This is where it would have been stored. ये लॉक था, ऑफिस था, ये सब खुलेंगे नहीं. और यहाँ पे मैं तो हो आया था. स्लीपिंग क्वार्टर्स और बाथरूम था. ये भी ऑफिस था. लॉक है. यहाँ नहीं गया मैं. ये कौन सी जगह? यहीं से आया था क्या मैं? आई डोंट थिंक मैं यहाँ से आया था. Aloy, you have now visited all accessible rooms of the facility. ये कौन सा रूम है? अच्छा, ये वापस वाला है. ये शॉर्टकट होगा. Oh, I've been down here before. It's where I first got into the facility. शॉर्टकट खुला है शायद. ऑप्शनल गोल तो हो गया पूरा. Let's talk to her now. Hello, Aloy. Hi. So you're... ready? Yes. Initialization is complete. All tests show that my heuristic matrix launched correctly and is stable. You must have many questions. Yeah. But 2 big ones first. We're not gonna be able to fix the biosphere without making you whole. I ran a search for your subfunctions at the Hades Proving Lab, but Minerva was the only one I found. Thankfully, the sensory capabilities of this facility are far more advanced. I will search for the others now. Transmitting query pattern. Receiving.
अब ये शायद लोकेशन बताएगा बाकियों की। Of Apollo, Artemis, and Eleuthia, I can find no trace. They are simply gone. What about the others? Ether, Demeter, and Poseidon are revealed. They lie within reach, procurable. तीन है। हेडीज तो मिलेगा लेकिन Hephaestus? इसको It too stands revealed, but it is not like the others. That's for sure. In the years since the extinction signal, Hephaestus has evolved. पिछले में हेडीज था, It is इसमें not हेफेस्टस confined to है। a single location. It haunts the global network that connects cauldrons to each other across the planet, making it exceptionally difficult to subdue. Let me guess. We need it bad? Correct. Its capabilities are essential. Without it, I can only delay the extinction of life on Earth. Hephaestus is our only hope of a permanent solution. So we start there? Unfortunately, we cannot. Procuring Hephaestus can only be attempted after my own capabilities have been significantly enhanced. तो पहले ये छोटे Grab वाले the other उठाने subordinate पड़ेंगे। functions first, then Hephaestus. Precisely so. So, Ether, Demeter, and Poseidon. How do I capture them? To recover a subordinate function, you will have to travel to its location and find the physical processor to which it escaped. Then, exactly as you did with Minerva, you must use the master override to revert the subordinate function to its original code state. And then how do I get it back here? The subordinate function must be loaded onto a data storage device and physically carried back to this facility. यहाँ पर मतलब आना पड़ेगा बार बार। अच्छा, इसमें डाल के लेकर आने The पड़ेंगे। cartridge your root kernel was stored on? Yes. Its capacity is limited, so it can only carry one subordinate function at a time. अब But बार in बार यहाँ all आना other पड़ेगा तो बार बार नए respects, डायलॉग्स it will होंगे। suffice. इसको टाइम भी लगेगा प्रोसेस करने में। Maybe you can help me make sense of something. A while ago, I had a run-in with a group of strangers who tried to kill me. They had machine servitors and a clone of Elizabeth Sobek with them. Yes, this was recorded by your focus. Do you know who they are? The answer to that question is related to the extinction signal that woke Hades, prompting my predecessor's self-destruction. The extinction signal? Okay, that sounds ominous. The signal did not come from Earth, Aloy. एलियंस हैं ये? अच्छा, Calculations are complicated. ये अर्थ वाले बाहर निकल गए हैं और अर्थ को ट्राई कर रहे हैं कि वापस वैसी हो जाए जैसे पहले थी। A distance so vast that light itself requires 8.611 years to cross it. Okay, so what's so far away and why does it want us dead? The Sirius star system. Serious? But that's where Far Zenith, their ship. The Odyssey. Yes, that's where it was headed. But it blew up. Unless... I don't... Why make it seem like they failed? They didn't want anyone to know. They didn't want future humans to think that they were out there. Wait. The strangers who tried to kill me at the Hades Proving Lab? The ones with the clone? Are you saying that they're from... that they're descendants of... Far Zenith? Yes, that is my conclusion.
How did you figure out that the extinction signal came from Sirius? The key came with data on your focus, from Silent's interrogation of Hades. The duration of the signal itself, 17.22 years. That doesn't make sense. You said that the signal took 8.6 years to arrive from Sirius. Why would the signal keep transmitting after it was received and you blew yourself up? Because the sender didn't know that had happened until it received notice from Hades. Which would take another 8.6 years to get back. Correct. Only then would the sender stop broadcasting, after a total of 17.22 years. So the duration, halved, gave me the distance the signal traveled. With that in mind, I simply scanned my astronomical database for any relevant location 8.6 light-years away. Because it was Far Zenith's intended destination, Sirius was the only logical source. The sole purpose of the signal was to destroy life on Earth, right? Why would descendants of Far Zenith want to do that? At this point, we can only speculate. I mean, Earth posed no threat to them. We don't have the technology to get in their way. We didn't even know about them. True. Unless... well... could it be that they want the planet for themselves? The strangers I ran into, they were after a Gaia backup of their own. I mean, if they did that... if they booted their own Gaia and boosted her power... until she could take control of Hephaestus... and then the whole terraforming system... Then yes, the system could be used to do what the extinction signal failed to accomplish. Snuff out life, and then potentially to build an entirely new biosphere. To their specifications. So they could be trying to do the same thing we are. But with opposite results. Extinction. Instead of salvation. Well, this is not good. You said Sirius is really far from Earth. 81 trillion kilometers, or 8.611 light-years. Right. So, how would the descendants have gotten here? On a spacecraft much like the Odyssey, though significantly more advanced. The journey from Earth to Sirius would have taken the Odyssey almost 300 years. This appears to have been much faster. If their ship departed Sirius at the same moment the extinction signal first began transmitting, the journey was made in just 29 years at an average of 0.297 the speed of light. If they did not set out for Earth until they learned of the extinction signal's failure, the journey was even faster, a mere 13 years, or 0.662 the speed of light. Okay, enough. You're making my head spin. The descendants I ran into at the Hades Proving Lab, they had a clone of Elizabeth Sobek. So that's consistent with the idea that they came here to salvage Zero Dawn technologies, right? Yes. As your own experience demonstrates, a clone of Elizabeth Sobek functions in effect as a key to the terraforming system. But how could they have made a clone? The Odyssey carried approximately 200,000 human zygotes, millions of animal zygotes, and billions of plant seeds. It is conceivable that Elizabeth Sobek's genetic material was sampled, with or without her knowledge, and carried aboard the ship in storage. That's... okay, but... I mean... This clone... how could she participate in this? Destroying Elizabeth's dream? It's evil. तो जबरदस्ती करा रहे हो तो डरती हुई लग रही थी. Perhaps she is loyal to the group and shares their objectives. Or perhaps she is a subordinate and has no choice but to comply with their orders. Elizabeth Sobek? A subordinate? I don't think so. The extinction signal didn't just wake Hades. It made every subordinate function self-aware. Why? I have wondered this myself. So far as I can tell, Hades was the sole target, and the partial sentience imparted to other subordinate functions was incidental.
So the signal could only have been sent by someone who had thorough knowledge of the system, huh? Yes. The signal's design was exceptionally precise and highly advanced. Were its intentions less malevolent, I would admire the intellect or intellects that produced it. So if the descendants came to Earth on a spaceship, I guess we can assume that their technology is powerful in all sorts of ways, right? Obviously Yes, तो अभी hit नहीं कर as पा your रही थी. encounter with them at the proving lab amply demonstrates, they appear to make extensive use of robotic servitors. Further, they seem to be equipped with some kind of protective energy field that shields them from harm. Yeah, no kidding. The one I fought seemed indestructible. Throughout history, every defensive technology has eventually been defeated by an offensive counterpart. Perhaps a way can be found to defeat their shielding. Yeah, I hope so. Or I'm not gonna be winning fights against them anytime soon. The 3 subordinate functions that you detected. What do we know about them? All 3 are relevant to Ether is responsible for detoxifying the atmosphere and moderating the weather. Okay, तो Poseidon यही मुझे controls लग the रहा है. organic and chemical composition of water resources. Demeter sows, fertilizes, and tends to plant life. If all 3 were restored to me, they would constitute a massive increase to my heuristic processing density. But beware. Their responses to my query pattern were irregular. In human terms, they are frightened, lost, and paranoid. Like Minerva. They need to be whole again. Exactly. The missing subordinate functions. What can you tell me about them? Artemis rewilded the Earth with a variety of animal species. Eleuthia was responsible for gestating, nurturing, and acculturating a new generation of human beings. Apollo was tasked with preserving, organizing, and disseminating vast archives of human knowledge and cultural achievements. Unfortunately, all archived Apollo data was purged on the 2nd of February, 2066, by order of Ted Faro. Pharaoh, huh? I really hate that guy. Understandable. He appears to have been pathologically narcissistic, impulsive, and unstable. All 3 of the missing functions have already served their purpose, or were prevented from doing so. Do you still need them? If attainable, yes. Restoring their remaining elements would ये increase शायद my optional heuristic होंगे. processing density. Unfortunately, I have no way to track them. They have disappeared without a trace. You said you need Hephaestus to save life from extinction. Why? Every subordinate function has value, but Hephaestus is by far the most important. Only by recovering and merging it can I regain my ability to design and mass-produce new machines at cauldrons across the planet. Cauldron Only through control it can I Hephaestus का है. program new machines and alter the tasking of existing machines to completely reverse environmental damage. Recovering other subordinate functions may buy us time, but without Hephaestus, I cannot permanently stave off mass extinction. Given Hephaestus's importance, is there really no way to capture and merge it first? I'm afraid that is quite impossible. In my present state, launched and merged with Minerva, I am operating at less than 1/5, 18.8%, of my intended processing capacity. Hephaestus dwarfs this figure. Were an attempt made to conduct the merge under these circumstances, Hephaestus would absorb me, rather than the other way around. A merge cannot be attempted until my heuristic processing density exceeds its own. Hey, And how many subordinate functions is that going to take?
Merging Ether, Demeter, and Poseidon will expand my heuristic network to 41.6% capacity, exceeding that of Hephaestus. You said Hephaestus isn't located in just one place. Correct. Unlike the other subordinate functions, which are confined to discrete physical processors, Hephaestus is distributed throughout the global network that connects the planet's cauldrons. So, when the time comes to subdue it, how do we make that happen? I do not know. While you are retrieving the procurable subordinate functions, I will attempt to find a solution. कभी वापसी आना है बार-बार. So, once Hephaestus has been recovered and merged, ये तब तक कोई we'll solution regain the बताएगी. capacity to mass-produce machines at cauldrons around the world. Yes, and to program their behavioral routines, or even control them directly. So could you build an army of machines? Attack the descendants of Far Zenith and take them out? It is in my nature to take any and all necessary steps to preserve life on Earth, human life above all. So yes, once I have been empowered with the capacities of Hephaestus, I could design, build, and command such an army. Given the nature of the Far Zenith threat, doing so may be our only option. I must admit, however, that I have misgivings about using such technology to kill, no matter how aggressive the enemy. That's good. It means you have a conscience. As Elizabeth intended. Indeed. So if the descendants... I guess we can assume that their technology is powerful in all sorts of ways, right? Yes. As your encounter with them, they appear to ferve energy throughout his every for assuming I know. ये तो वही बात रिपीट कर रही है. पता नहीं वो ग्रेड आउट क्यों नहीं था. What is the state of the biosphere? Is the terraforming system functioning at all? In a sense, the terraforming system never stopped functioning. The difference, since my predecessor's destruction, is that there has been no central governing intelligence to monitor its robotic agents and assign new tasks. As a result, errors have accrued, and day by day, the biosphere has gradually veered ever more sharply towards destruction. In recent months, disturbances in the biosphere have become obvious. But these bellwether phenomena offer just the merest glimpse of the complex and accelerating cycles of environmental dysfunction, now driving Earth's biosphere towards collapse. And you can't do anything to stop it? If you can return Ether, Poseidon, and Demeter to me, यही I है. can improvise modest corrections to parts of the system. Weather will improve, water will be purified, and rampant plant growth curtailed. But such corrections will not stave off collapse. They will only buy us time. Hephaestus Only चाहिए. with Hephaestus can I design and produce new robotic agents designed to permanently reverse the damage that has accumulated. All efforts must be directed toward that end. How long do we have then? At present rates, without additional factors, the biosphere will cross a point of no return in approximately 4 months. And if I gather Ether, Demeter, Poseidon, merge you with them? We will only gain a few months more. Well, every bit counts. I guess I should get going and start bringing back subordinate functions. What can you tell me about their locations? अभी तो बताई थी इसने. पूरा मैप पे दिखाई थी. The subordinate functions sought physical processors capable of holding them. So in each case you will be looking for a powerful computer of some kind. Ether is the closest, and therefore might be the easiest to acquire. However, it appears to be in the middle of Tanakh territory. My knowledge of that tribe is limited to data I read on your focus, but
they seem to have a significant inclination towards violence. Well, that's a nice way to put it. What about Poseidon and Demeter? Poseidon has taken shelter in the desert south of this location. My substratal geography data indicates that a major old-world settlement called Las Vegas was located there. A ruin in the middle of the desert, huh? Strange place for an AI devoted to water. Agreed. As for Demeter, it appears to be located on the coast to the far west. Unfortunately, I am unable to provide any relevant data about the region. As such, it may be the most difficult to retrieve. Okay, so 3 subordinate functions to go after. Ether, somewhere in Tenakth's territory. Poseidon in the desert, and Demeter on the coast. Where will you begin? ये भी पूछ रही है। वैसे तो मैं दोनों कर सकता हूँ। ईथर पे ही I think जाते I'll हैं। head for Ether. Then I will assign Ether as the objective on your focus. तो हम खुद भी कर सकते हैं। If you obtain it, I may be able to use it to quell the most severe storms in the region. Though I will require Hephaestus and the control over machines that it offers to permanently stabilize the biosphere. Should you change your mind, you can update your objective via your focus interface at any time. I will also transmit a summary of available data on all of the subordinate functions to you for reference. Is there anything else I can help you with? I know you have a great deal to accomplish. I do, don't I? Is something wrong? I don't know. It's just that... Elizabeth set the bar pretty high. She had a dream for you, for life on Earth, and... a lot has gone wrong, and it's all on my shoulders to fix it. Do you think I can do it all? Repair the system? Defeat Varzenith? Live up to her example? Absolutely. In her last message, my predecessor declared her unwavering conviction in your success. In you, all things are possible. You prevailed in purging Hades and rebooting my system core. You will prevail in this. Thank you, Gaia. Well, I guess I should get going. I have unlocked the facility's exits. One leads onward to the west. The other leads back down the mountain to Plainsong, should you wish to return east. Varl? Whoa! Gonna have to get used to that. That's you, Aloy? Yeah. Gaia's opened the exits to this place. Can you and Zoe meet me by the west door? Be right there. Yay! ट्रॉफी भी खुल गई। Okay. I need to bring Ether back for Gaia. Varl and Zoe are waiting for me by तो the यही west वाला डोर exit. था जो लॉक था। But I could दो have डोर that लॉक east थे तो first. दोनों Checking how Plainsong's doing after the Yes. attack. I think it'll be better this way. After you, Aloy. सीधा वेस्ट में चली गई, ईस्ट में नहीं गई। I need to head further west. To, get more of Gaia's components. Make her stronger. You two can stay here in the meantime. Gaia can help get you up to speed. I'm not trying to shut you out. This, it's like... training. Actually, I'm gonna go back east to get Erend. Bring him here. Look, allies, friends can help. We have a place to stay now. And like you said, Gaia can teach us. अंदर catch इसका us up. बेस है ना, अब सारे be दोस्त से okay. वहीं बिठाएगी। मुझे लग रहा है मेन गेम अब शुरू हुआ है। Take these then. One to wear, one for backup. While you're at it, stop by Stone's Echo and look for Milu. Give her a message for Talana that I found a way इसके over पास the इतना mountains. फोकस आया Will do. कहाँ से लेकिन? Are you going with him? No. After what happened in the cave below, I want to stay here a while. There is much I need to understand.
maybe by the time you get back, I'll have a thing or two I can teach you. Looking forward to it. When will you be back? I'm not sure. But hopefully I'll have one of Gaia's missing components with me. Be careful out there. Even in Plainsong, we heard how the Tenakth clanlands are suffering from storms, machines, and now Regala. Don't worry about me. अब और नई machines मिलेंगी, नया area है, नई territory है. The Tenakth clanlands. Somewhere out there's 3 of got. 2 skill points मिले हैं. इसको 3 में ही अपग्रेड कर सकता हूँ. एयर डैमेजर यार, ये तो चाहिए यार. और कुछ है जो अपग्रेड कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं अपग्रेड कर सकता, वेट ही करना पड़ेगा. बेसिक स्किल हर क्लास के हो चुके हैं. Gaia sub-functions. And who knows what else. ओके, ये तीनों वो है, ईथर, पोसाइडन और वो क्वेस्ट तीनों लगी हुई हैं. मेरी मर्जी में जहाँ मर्जी जाऊँ, ऐसा नहीं है कि उसको बोल के ही जाना पड़ेगा. रोबोट दैट बाइंड, 2 क्वेस्ट हैं, साइड क्वेस्ट. एक एरेंड है, सैल्वेज कॉन्ट्रैक्ट है. अरे यार, हंटिंग ग्राउंड भी तो था प्लेनसॉन्ग का. मेले पिट. एक और रेबल आउटपोस्ट भी मिल गया है. तो ये सब करते हैं. मैप पे जाके देखता हूँ. ये तो अपना बेस्ट है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. अभी मेरे पास ये जगह भी पूरी है एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत कुछ है. तो पहले इधर ही चलते हैं. फास्ट ट्रैवल बैकपैक यूज़ कर लेता हूँ, वापस जाता हूँ पीछे. आई होप वहाँ पे कर सकता हूँ टेलीपोर्ट डायरेक्टली इधर एग्जिट पे. हाँ, ट्रैवल कर सकता हूँ. नाइस. ओके, सो मेरे को ये भी देखना है कि ये अभी तक ये क्यों नहीं पूरा हुआ है. शैडोज रीच. तो कोई नहीं, ये पहले हंटिंग ग्राउंड पे जाते हैं, देखते हैं कैसा है. हंटिंग ग्राउंड पे नए वेपन्स भी होंगे डेफिनेटली, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा एक ट्रेडर होता है. मेरे पास मेटल शार्ड्स कितने हैं? 500 है बस. क्योंकि वहाँ पे वीवर भी था अभी जिस लोकेशन पे गया था मैं, जो भी था. स्टिचर, वीवर कह रहा हूँ, स्टिचर एंड ऑल वो सब भी थे. तो उधर के भी वेपन्स हैं जो मुझे लेने हैं. ये तो हंटिंग ग्राउंड आ गया. स्ट्राइक कार्वर, लीप प्लैशर पीस ले लेते हैं. एक क्लॉ स्ट्राइडर, ग्लिंट हॉक पीस, लॉन्ग लेग, क्लाउ हॉर्न, सबके हैं, बहुत सारे पीस हैं. वाइडमो का भी है. ये सब इसके पास एक ही थे मुझे लग रहा है, या फिर मैं खरीद नहीं सकता. खरीद नहीं सकता. लेट्स सी. तो अरे यार नाइस यार, ये अच्छे हैं. शॉक, आइस और फायर डैमेज तीनों वाले. रोप कास्टर है और ये भी अच्छा है. ये मुझे टेयर डैमेज वाला लग रहा है. तो सब लेना है धीरे धीरे करके. बस दिक्कत आ जाती है मेटल शार्ड्स पे. चलो ये एक बार देखते हैं वर्कबेंच पे पहले कुछ अपग्रेड कर सकता हूँ या नहीं. ओके, 5 अपग्रेड्स हैं मेरे पास और 2 आउटफिट अपग्रेड भी हैं. ये तो मेरे ख्याल से उसका होगा, ग्रीन शाइन फ्रैगमेंट का. ये अभी नहीं कर रहा मैं, ये काम का है. दिस आई हैव टू डू इट. बहुत हेल्प करी थी मेरी. अब 2 ग्रीन शाइन फ्रैगमेंट चाहिए.
और कुछ है? और कुछ नहीं कर सकता अपग्रेड। बस ट्रैप बना सकता हूँ एक, एंड आई डोंट थिंक मेरे को अभी ज़रूरत है इसकी। अभी इससे बात करते So हैं। you made it. Welcome to the hunting grounds. My name is Avina. I'm the caretaker of the grounds. I make sure they're kept fit for training against machines, whether they be used by our soldiers or our Utaru neighbors. Same as the Karja then. Ah, yes. We've heard those cowards claim the idea of hunting grounds as their own, but our soldiers have been training in places like this since before the clan wars. I'm willing to bet our trials are beyond anything the Karja would dare face. A skilled hunter like you might actually find them challenging, rewarding too. पहला Win तो our बहुत trials easy and था। you'll earn stripes. That in turn will garner you some medals. Remnants of our victory against the Karja during the Red Raids. You can take medals to the arena at the Grove, our capital. Its keepers will let you exchange them for the finest weapons and gear our tribe has to offer. I'll keep that in mind. I should probably also mention our carver. They make pieces for a popular game of ours. Watching the machines at the grounds gives them inspiration. You mean strike? You know of it. And maybe you should check out their wares. Carvers almost always have extra pieces to trade for the right resources. I should get going then. I have other grounds to inspect, but rest assured they will be open to you. Walk with the 10. देखते हैं इसके पास क्या क्या चैलेंजेस हैं। Are these your hunting grounds? They are. Try a challenge, and we'll see if you live up to your reputation. तो पहला है साइलेंट लूटिंग ट्रेल। लूट सप्लाई कैशेस विदाउट अलर्टिंग और डैमेजिंग एनी मशीन्स। ओके, ये साइलेंट का ही है पूरा। किल मशीन यूजिंग साइलेंट स्ट्राइक एंड स्ट्राइक फ्रॉम अबव टू। ये भी इतना मुश्किल नहीं लग रहा, ट्राई करते हैं। तीन सप्लाई कैश लूट कर रहे हैं बिना डिटेक्ट हुए। एक ही है क्या वॉचर? नीचे तभी जाऊंगा जब मशीन स्कैन कर लूंगा एक बार, आइडिया लग जाएगा कितनी है। दो ही मशीन्स लग रही है मेरे को यहाँ पे, दो से ज्यादा दिख भी नहीं रही है। तो पहला तो वही वाला करते हैं जो ये सामने दिख रहा है। ओके, है मशीन और शिट, कल गड़बड़ हो गई थी अभी। यहाँ पर भी एक मशीन है तो मार्क कर लेता हूँ। तो मारना नहीं है बिल्कुल भी। क्या ऊपर भी है? Okay, I'm scared right now. डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। गलत टाइम पे अगर पलट गई तो दिक्कत हो जाएगी। या फिर एक मशीन कोई हुई ऐसी यहाँ पर जो मैंने टैग नहीं करी है। लास्ट बचा है। Don't detect me, please. Okay, वो कहीं और ही गई हैं। I think gold ही मिला है। Please gold हो।
You've got. I see you live up to the stories. पूरा मिला है. Okay, let's see the other one. Silent Strike Trial. ये तो हो जाना चाहिए अगर बरोबर है तो एक ही बारी में मर जाते हैं. 3 मशीन स्किल. 3 मशीनें मारनी है तो पहली तो ये रही. Then we have this. They can override tracker burglars now. And we have this one. ओके मैं ऐसा नहीं मार सकता इसको एक बारी में. ये तो लुलवा हो गया. एक बारी में साइलेंट स्ट्राइक पे नहीं आ रहे. मेरे को अपना स्किल ट्री से बढ़ाना पड़ेगा ताकि एक बारी में मर जाए. ये वाला कैंसिल करना पड़ेगा. You want another trial? एक बार देखता हूँ पॉइंट्स कितने चाहिए स्किल ट्री के लिए. इन्फिल्ट्रेटर में होगा. ये तो रेंज का है. ये होगा 50% मोर डैमेज. ये और करना पड़ेगा. इसके लिए चाहिए 2 स्किल पॉइंट. 1 स्किल पॉइंट और चाहिए. ओके मेरे को बस 1 स्किल पॉइंट चाहिए. फिर स्टेल्थ स्किल वाला अपग्रेड करके तभी होगा. वाइड मॉ आई थिंक नाउ अभी भी पार्शली अनलॉक्ड है. अच्छा हाँ मेरे पास में ये तो है ही. तो मैं ट्राई करता हूँ इसको के दांत निकालने का. टस्क्स आई नीड हिज टस्क्स. ट्राई करते हैं. एक बार फिर से वेलकम है एलोय की दुनिया में सभी भाइयों का. अरे कैसे हो रॉकी भाई? हाथ तोड़ने हैं यार. देखो अगर श्रेडर गॉन्टलेट से इसके ये दांत निकल जाते हैं तो अरे निकल कैसे गया हाथ से? Valor on infects. निकला नहीं मुझे लग रहा है दांत अब भी इसका. आप ही के जैसे है भाई जी. अरे ये तो ऐसे ही मर रहा है यार. दे दे यार दांत. दांत पता नहीं कैसे खुलेगा. मर गया ये तो ऐसे ही बिना दांत दिए.
कलेक्ट करते हैं। दांत दे रहा है क्या वो वीक पॉइंट? दांत नहीं, वीक पॉइंट नहीं है उसका एक्चुअली, बट वो ना मेरे को अपग्रेड के लिए चाहिए दांत उसका। ये मुंह खोलता ही नहीं है, मुंह सिर्फ अटैक के लिए खोलता है ये, तो दिक्कत हो रही है बंदे की साले की। तो वो दांत मिलने में तभी इसका ओवरराइड भी खुलेगा, और मुझे एक क्या कहते हैं अपग्रेड के लिए भी चाहिए उसका। मेरा नीचे 12 हो गया लेकिन ऊपर मेडिसिन पाउच छोटा हो गया, ऐसा क्यों हुआ है यार? तो मेरे को ब्रिसल बैग का भी सामान चाहिए था, तो ब्रिसल बैग की साइड पे भी जाके एक बार देखता हूँ इनके वीक पॉइंट्स क्या हैं। ब्रिसल बैग्स तो मेरे ख्याल से वो वही हैं जो बोर टाइप मशीन्स थी सारी। Old world ruin. I have something useful lying around. I should take a look inside. यार रून मिल गया है। तो पूरा वहाँ तबाही मचा रखी है उन लोगों ने, तो ब्रिसल बैग्स ने। इस साले कहीं भी शांति से बैठते नहीं है। पता नहीं अब किससे लड़ रहे हैं ये, पहले से ही ऑलरेडी लड़ रहे हैं। क्लॉस राइडर भी है यहाँ पे। It'll be slow going if I use acid on it. ये कौन सी जगह जहाँ ये लड़ रहे हैं? और ये लड़ किससे रही है मशीन्स? भाई ये कितना गंदा बो है यार, आई हेट दिस बो। And I have this. इसको ओवरराइड करता है लेकिन यार एक बार। How it should die. Take the heat. तो ऐसे ही धमाकों में मरेंगे। बच गया। थोड़ा सा ऊपर रह गया। ये भी गई।
कुरिल में मर गई उसी चक्कर में। और भी है क्या? आवाज आ रही है मशीन की। क्लॉस राइडर है। ये क्या मारा इसने? अरे यार खत्म हो गया। 4 हेल्थ बची थी मेरी में। अब मरेगा ये। ओके 3 लेवल हो गया मेरा, मतलब लेवल अप। मुझे 2 स्किल पॉइंट मिल गया है। तो सबसे पहले तो इन्फिल्ट्रेटर वाला वो स्किल, साइलेंट स्ट्राइक वाला, ये लेना है। और 1 पॉइंट अभी बचा के रखते हैं, देखते हैं काम आएगा। ये ले लेते हैं, चलो। प्लीज प्ले अनचार्टेड सीरीज। यार अनचार्टेड सीरीज मेरे को इतनी अच्छी लगती नहीं है, बट आई विल ट्राई, क्योंकि वो ऐसे ही है यार, जहाँ घुसो बस गोलीबारी गोलीबारी गोलीबारी। So it's not my kind of game. एल्डन रिंग अगर खेलने का वो है तो एल्डन रिंग में खेल सकता हूँ, बिकॉज ऑफ स्ट्रीम तो मैं खेल ही रहा हूँ। हाँ मैंने अनचार्टेड 1-2 खेली है, 1 और 2, तो मेरे को इंटरेस्टिंगली लगी। इसका पता नहीं मेरे को कब मिलेगा, इसको खोलने के लिए जो भी है। ये पीछे कुछ छुपा हुआ है। अरे हाँ मैं इनसे ब्लेज ले रहा था, इनके पास बहुत ब्लेज पड़ा होगा। ओके कलेक्ट कर चुका मैं सारा। तो अभी हंटिंग ग्राउंड जा सकता हूँ मैं, दोबारा ट्राई करता हूँ हंटिंग ग्राउंड जाने का, बिकॉज अब मेरा स्टेल्थ स्किल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो साइलेंट स्ट्राइक जो है मे बी काम कर जाए। लेट्स सी कहाँ है हंटिंग ग्राउंड। PS4 वाले खेलना अच्छे से बनाए थे अनचार्टेड गेम। PS4 वाला अनचार्टेड 4 था मेरे ख्याल से, एक 4 था और एक थीव्स एंड था। चलो ट्राई कर लेंगे एक बार, मैंने खेले नहीं है, वो तो नहीं खेला मैंने, तो ट्राई कर सकते हैं। मे भी मैंने पुराने वाले खेले हैं, मेरे को इसलिए पसंद नहीं आए। वो स्टाइल मेरे को अच्छा नहीं लगता है एक्चुअली, जो उसका स्टाइल है ना, कि तुम जहाँ मर्जी चले जाओ, फिर एनिमीज आप मिल जाएंगे तुमको, वो तुमको गोलियां मारते रहेंगे, तुम उनको गोलियां मार के ख़त्म करो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब तुम्हें अगर स्टेल्थ ही अप्रोच करनी है तो उस तरीके से निकल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इतना मज़ा नहीं आता था मेरे को उसकी पुरानी मतलब सीरीज़ में। मेरे को क्यों मज़ा नहीं आया मैं वो बता रहा हूँ। हेलो अतुल गुप्ता, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई, हाउ आर यू? ओके सो अब ट्राई करते हैं। अब अगर एक बारी में मर जाए तो बढ़िया है, वरना फिर कुछ देखना पड़ेगा कि कैसे मरेगा ये। अबे यार ये स्ट्राइडर ही मेरा उल्टी जगह पे खड़ा हो गया। यहाँ से जाते हैं। देखते हैं अगर स्टेल्थ किल आता है तो। एक बारी में नहीं मर रहा ये। एक बारी में तो नहीं मरेगा ये।
अभी भी नहीं मरेगा। It's fallen. ये गिनेगा भी नहीं उसको। स्टेट ट्रायल तब तक नहीं होगा जब तक वन हिट में इन बरोवर को नहीं मार सकता। तो मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा मैं क्या कर सकता हूँ इसको बिल्कुल ही स्टेल्थ किल में मारने के लिए। मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ा और लेवल अप करना पड़ेगा जिससे मेरा अटैक बूस्ट होगा। और अभी देखता हूँ और क्या क्या करना पड़ेगा। इसके हंटिंग ट्रायल्स मुश्किल नहीं है, बस ये है कि इट नीड्स मोर लेवलिंग। ना इसमें तो कुछ नहीं है, मैं पूरा मैक्स्ड आउट हूँ। तो मेरे ख्याल से बस मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि ये बोनस डैमेज मिलेगा ना। तो ये वाली वैलर सर्ज इक्विप करके देखता हूँ, क्या पता उससे हो जाए काम। इन्वेंट्री कहाँ है? क्योंकि 100% होगा तो उतने में तो ये मर ही जाएगा। ये वाली वैलर सर्ज इक्विप करके देखता हूँ। ये इक्विप क्यों नहीं हो रही है? मेरे ख्याल से यही वाली एक्टिवेट है। 3 आए हैं। क्या 3 आए हैं? Should I Okay, let's set up try. the grounds? Just slide down a rope to start. I look forward to seeing you compete. Let's activate the Valor Surge. I think I should be able to kill him. बताओ यार, ये वैलर सर्ज में भी नहीं मर रहा, ये तो गलत है यार। प्लस 100% था, ये हुआ क्यों नहीं, मरा क्यों नहीं? मैं भी वो डिटेक्ट कर लिया था उसने मेरे को, अनअवेयर नहीं था वो, मैंने भाग के गलती कर ली। फिर डैमेज तो इसको उतना ही हुआ है। You didn't finish your Let's trial. retry. अगर वैलर सर्ज पूरा हो तब तो बढ़िया है। पूरा नहीं है। One of my best trials. Just use any rope कुछ to और jump देखना in, पड़ेगा and I'll इसका। start timing you. You wanna start अगर मैं over? ऊपर से ही मशीन्स की हेल्थ कम कर दूं और देन मारूं, चैलेंज तो तभी शुरू होगा। Just slide ट्राई down a करके rope देखते to हैं। start. I look forward to seeing you ओके, मैं यहाँ से बो नहीं निकाल सकता और नीचे जाते ही ट्रायल का शुरू हो गया है। तो अभी नहीं कर सकता ये ट्रायल, कुछ देखना पड़ेगा इसके लिए। Had second thoughts? मेरे को या तो कपड़े भी ऐसे पहनने पड़ेंगे जिसमें मेरे को स्टेल्थ बोनस मिले। एक बार देख लेता हूँ अगर मेरे पास है तो आउटफिट I'll be में। here. अभी जो मैंने पहन रखा है उसमें मुझे सैल्वेजर का मिल रहा है, कंसंट्रेशन, साइलेंट स्ट्राइक गेन, ये वाला है जो मैं पहन सकता हूँ। स्टेल्थ रेंज, साइलेंट स्ट्राइक हील +2। मेरे ख्याल से यही वाला है जो मेरे काम आएगा फिलहाल। हाँ, स्किल नोट बहुत अच्छा है। When you return, एक लिए लास्ट ट्राई कर सकता हूँ। let's get you अगर started. ये नहीं हुआ तो आई डोंट नो मैं क्या करूँ। Just slide down a rope to start. I इस look पे- forward to seeing you compete. हाँ, ये अब भी नहीं मर रहा। ओके, उसका फायदा तो हुआ था मेरे को, पर ज्यादा नहीं हुआ। ये ऐसे नहीं होगा, तो अभी निकल जाता हूँ यहाँ से। अनचार्टेड के पार्ट PS4 में, हाँ, एक अनचार्टेड 4 PS4 में ही आई थी ना। You wanna start over? ओके, ये तो नहीं होगा, तो इसको कल ही देखते हैं हवल से, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि मेरे को I'll be ज़्यादा here when ही you return. इसके लिए ग्राइंड करना पड़ेगा। अभी मेरे पास जो है मैंने पहना था फुल्ली अपग्रेडेड भी है वो, नहीं, मेरे ख्याल से पूरा अपग्रेड करूंगा ना ये वाले को, तब मेरे ख्याल से मेरे को ज़्यादा फायदा होगा, तो इसके ज़्यादा स्किल्स खुलेंगे। तो ये वाला लेके रखता हूँ,
पहन के रखता हूँ बिकॉज ये मेरे उसको भी सूट करता है। मैं स्टेल्थली खेलने की कोशिश करता हूँ तो स्टेल्थ डैमेज बढ़ा रहा है ये मेरा। तो या दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल मिलते हैं, कल भी यही खेलेंगे होराइजन। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम। See you tomorrow. Good night. Take care.